Hello children, welcome to Spark Physics by ASHISH SHARMA sir, the easy and simple way to learn the concept of physics. Today we are dealing with the next topic, or we can say we are going to start the next chapter, that is motion in straight line, which comes under kinematics, your second unit of class 11. Okay, so before we start the main concept like distance, displacement, speed, velocity, acceleration, equations of motion, graphs, all these we will cover in this unit or this chapter. There are few things which you need to understand, the basic things कि वो क्या है, that we need to see. Okay, I have written it on the board. Let's see. First we will take mechanics. It is the branch of physics which deals with the study of rest or motion of the object. हम एक ऐसी ब्रांच पढ़ते हैं फिजिक्स में जिसमें ऑब्जेक्ट का रेस्ट पोजीशन और मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं. राइट, यू कैन सी इट्स parts. There are two types of mechanics. One is statics and the other is dynamics. In statics we deal with the study of objects which are at rest, and in dynamics which we deal with the study of objects which are in motion. Okay, now you can see dynamics again can be divided into two. One is kinematics and another is dynamics proper. So in kinematics you see the study of motion of the objects without taking into account the cause of motion. हम उसका कारण नहीं देखेंगे, why that motion, right? We will be just seeing कि okay, object is moving from this point to this point or this town to that town, and we will be finding many things. Object is thrown upward and object is falling down, and we will be calculating many things. तो हम उसमें ये नहीं देखने वाले हैं कि what is the cause of that motion. But in dynamics proper we study the motion of objects by taking the account the cause of motion. हम इसमें पढ़ते हैं कि उसका cause क्या है. Okay, then you can see Galileo was the first to discover the description of the motion. Then there are two terms from where our chapter will begin, that is motion in straight line, that is rest and motion. हम कब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, कि ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट मोशन में है. We will be seeing that the object is said to be at rest when it changes its position with respect to its immediate surroundings. This word we use, immediate surroundings. Immediate surroundings means if I am standing here, I will be talking about this nearby surroundings. I am standing here and I will not talking about the surrounding of the other surrounding which is there in the other city, other town, other mohalla aapka. Okay, but here we will be talking about the immediate surroundings. In case of motion, the object is said to be in motion when its position changes with respect to immediate surroundings. उसकी position time के साथ, surrounding के साथ change होगी. That is called motion of the object. These rest and motion are the relative terms. To someone you may be at rest, to some other one you may be in motion. है ना? Interesting. Like if you are sitting in a moving train, आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, right? So the person who is sitting next to you or in front of you is at rest, but the person who is outside the train is in motion, right? The person who is standing outside is at rest with respect to immediate surroundings, but to him we are moving, both me or you or the person who is sitting next to you in the train. Getting my point? We all need to see with respect to which frame we are talking about. If I am standing here, I am at rest as well as I am in motion. We need to see with respect to what then? If I say I am at rest with respect to these things which are there around me. But with respect to other planet, since I am standing on the planet Earth, with respect to other planets, Earth is moving, so I am in motion, right? Let's see few more things. Now we will take one definition, very important, that is called point object. In many places you will see कि point object word use हुआ है.
या हम जहां भी ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे इन ऑल द यूनिट्स लाइक काइनेमेटिक्स, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन प्लेन, या फिर हम लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, वर्क एनर्जी पावर की बात करेंगे, एवरीवेयर वी कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट टू बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट? सो that means we need to understand what is the point object. Point object can be any object if the distance covered by that object is much more larger than the size of the object. ऑब्जेक्ट की साइज से वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है, तो दैट ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. यदि हम मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा किलोमीटर ट्रेवल कर लेते हैं, देन वी आर कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. आवर अर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, यू नो, है ना? हाउ? वाई? बिकॉज इट्स डिस्टेंस कवर्ड अराउंड द सन इज मच मोर लार्जर देन दैट इट्स साइज, इसलिए हम उसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है? नाउ वी हैव एक्चुअली मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव स्टडीड दैट 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन, 1D, 2D, 3D, ये सब क्या है? लेट्स सी. 1 डायमेंशन मोशन में क्या होता है, या किसी भी मोशन को जब हम समझते हैं तो वी यूज 3 कोऑर्डिनेट्स, x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स. बट there is not possible, or sometimes, many times it happens that we use only 1 coordinate. Sometimes we use 2 coordinates, sometimes we use 3 coordinates out of all the 3's, right? So based on that, how many coordinates out of 3 coordinates x, y and z you are using them? Based on that we can differentiate. So if you are using only 1 coordinate, say x coordinate of x y z, say y coordinate, say z coordinate, कोई भी एक coordinate यदि आप यूज कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, then it is called 1 dimension. Name itself suggests कि 1 dimension 1 coordinate. 2 dimension, if you use 2 coordinates out of x y z, then it can be x y, it can be y z, it can be z x, कोई भी 2 coordinate यदि आप यूज कर रहे हैं, then it is called 2 dimensional motion. Okay, now 3 dimension motion, if you talk about all the 3 in explaining the object's motion, that is called 3 dimension motion. Using example also you can see, in 1 dimension motion we can consider motion of the train along the straight track. ट्रेन स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो आप केवल x, या तो x कोऑर्डिनेट में जा रही होगी वो, या y में ले लेंगे आप, या z कोऑर्डिनेट ले लेंगे, then it is 1 dimension motion. एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री, एक ही डायरेक्शन में गिरेगा वो, एक बार में घूमते घामते तो नहीं आएगा कि x में भी जाएंगे, y में भी जाएंगे, z में भी जाएंगे, फिर जाके हम अर्थ पर गिरेंगे. नो, ऑन द ग्राउंड वी विल फॉल, ऐसा तो नहीं है ना. सो मैन वॉकिंग ऑन ए लेवल एंड नैरो रोड. यू कैन सी एग्जाम्पल्स ऑफ 2 डायमेंशन मोशन. मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का मोशन वी विल बी टॉकिंग इन 2 डायमेंशन. हम वहाँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लेंगे, या वाई जेड ले लेंगे, या एक्स जेड कोऑर्डिनेट में एक्सप्लेन करेंगे. देन मोशन ऑफ कैरम कॉइन्स, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अगेन इट इज 2 डायमेंशन. 3 डायमेंशन मोशन वेयर वी विल बी यूजिंग 3 डायमेंशंस. कहाँ यूज करेंगे? स्पेस में. कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्पेस में है तो वी विल टॉक अबाउट ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स वी कैन डिस्कस. ऐसे स्पेस पर रखी हुई है, मूव कर रही है, तो आप तीनों कोऑर्डिनेट्स उसके बता सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. काइट फ्लाइंग ऑन ए विंडी डे, हवा चल रही है और आप पतंग उड़ा रहे हैं, तो वो तीनों डायरेक्शंस में जा सकती है. वी कैन हैव द चेंजेस इन ऑल द 3 डायमेंशंस. Motion of aeroplane, again in the air, when it is flying you will find we can explain its motion in the 3 coordinates x, y and z. So dear children, we have distance and displacement, important concept, आपने क्लास 9 में पढ़ा है, फिर भी हम एक बार करते हैं. डिस्टेंस, आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, when you travel or go to school from your home, there are many possibilities how to reach. आप सीधे रास्ते पर जा सकते हैं जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो. You can go to your friend, pick up your friend and then you reach home. That friend may not be on the same or the shortest path which you always follow. In that case what happens? You can go with the different paths, right? So the distance covered by you for the same destination is different, right?
because you are not following that you should go with the shortest path, you can go through any path. Okay, so distance basically is the actual path which you follow. आप किसी भी रास्ते से जा रहे हैं, बट आपने कितना किलोमीटर एक्चुअल पाथ फॉलो किया है, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट. You will find distance covered will never be zero, it cannot be negative, it is a scalar quantity, and distance never decreases with time. टाइम के साथ कभी कम नहीं होगा. आप टाइम बढ़ाएंगे, आप ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, ऑब्वियसली डिस्टेंस विल इंक्रीज. बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा. आप कितने भी घूम के चले जाइए, बट शॉर्टेस्ट रूट जो देखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी because it has magnitude as well as direction. Then it can be zero, it can be negative, and it decreases with time if your object goes towards the initial point. उल्टा initial point की तरफ यदि जाना शुरू कर दे object, तो your displacement will come negative. Now if we take the example, suppose if I say the object starts from here, point A, reaches point B, covering distance 4 kilometers, then it turns left, point C, covering distance 3 kilometers, this is 4 kilometer. What is the distance and displacement? What we are saying distance? Distance is the actual path between initial and final points. ऑब्जेक्ट आपका A से शुरू हुआ, B पर गया, C पर गया. टोटल पाथ कितना होगा? AB plus BC, which will be 4 plus 3, 7 kilometers. But when we talk about displacement, it is the shortest path between इनिशियल फाइनल पोजीशंस. अब शॉर्टेस्ट क्या है? आप जरूरी नहीं है ना इस रास्ते से जाएं, आप सीधा चले जाइए. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज AC. कैसे निकालेंगे? बाय राइट हैंड ट्रायंगल. इट इज अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, नथिंग बट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विल गिव यू हाउ मच? Under root 25 equal to 5 kilometers. So see here, distance is 7, displacement is 5, because in displacement we follow the shortest path, right? In distance we follow the actual path. So you can see here, displacement can never be more than distance, but distance can be more than displacement. Okay, we can have one more example. Let's see. If I say that we have a circular path, yes, this is the circular path, starts moving from point A, reaches point B, reaches point C, goes like this, and then come back to A. Even you can take one more point D and then reaches A. Okay, so many possibilities now here. Suppose first question says, what is, your question is, we can write like this, what is distance and displacement when, number 1, when object covers, number 1, completes whole circular path. ऑब्जेक्ट या तो कवर करती है, कंप्लीट करती है होल सर्कुलर पाथ, मतलब ऑब्जेक्ट यहां से शुरू करना शुरू करेगी and it goes and come back to A. What is distance?
एक्चुअल पाथ, दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस r। यदि ये सर्कुलर पाथ को पूरा कर रहा है मतलब क्या है, इट इज ए सर्कमफ्रेंस। तो वो सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ विच इज नथिंग बट circumference of circle equal to 2 pi r। यूनिट आपको जो भी दिया हो, रेडियस मीटर दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, किलोमीटर में दिया है, आप लिख लीजिए। ओके, बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? इन द सेम सिचुएशन हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द डिस्टेंस और द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट क्या था, ए, सर्कल में घूमकर आया, फाइनली कहां पहुंच गया, ए। हाउ मच डिस्टेंस इट हैज कवर्ड, ए टू ए, इट इज 0। ओके, नाउ केस 2 इफ यू टेक, it covers half the path, that means it reaches A to C। कितना, circumference का आधा, half of the circumference, it is half into circumference which is half into 2 pi r which is equal to pi r units you can write। What about displacement? Displacement again the shortest path। अब यहां से देखिए, this is going from A to B, B to C, it is covering circular path। इतना घूम के जाने की बजाय it can go straight A to C। Displacement is AC and that is nothing but diameter which is equal to 2r, radius is r। Yes, another case you can have, third case, it covers 1/4 of the circular path। 1/4 मतलब A to B। what is distance? circumference का 1/4, जैसे यहाँ हाफ था, here it is 1/4 into circumference which is nothing but 1/4 into 2 pi r will give you pi r upon 2। What about displacement here? It is, you see, displacement you check straight, instead of going A to B it can go straight like this, right? When we talk about this straight, this is 90 degree, this is nothing but hypotenuse of this right angle triangle, so we will be finding it is shortest path will be under root, this is r, this is r, isn't it? So we will get r square plus r square, it is nothing but under root 2r square, we can write root 2r। This is the displacement। तो एक ही सर्कुलर पाथ के एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास कितने सारे केस मिल गए। यू कैन गो फॉर 1/3 ऑल्सो, यहां आ जाता है, दैट ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट, राइट? ट्राई दैट वन, इफ यू फाइंड एनी डाउट you can ask in the comment box, right? One more question I want to take, very interesting question in the distance and displacement concept. Let's see. A drunkard walking on a narrow lane. Caution is, don't try it at home and don't try to see what actually happens to the drunkard. A drunkard walking on a narrow lane takes 5 steps forward, 5 स्टेप आगे चलता है, एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, 3 स्टेप पीछे आ जाता है। 5 स्टेप्स आगे चल रहा है, 3 स्टेप्स बैकवर्ड आ जा रहा है, फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, इट गोज ऑन, इजंट इट? भाई ड्रंकर्ड है, 5 स्टेप आगे जाएगा, 3 स्टेप पीछे आ जाएगा, फिर 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे आ गया, एंड सो ऑन। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर का उसका एक स्टेप होता है, और इट टेक्स 1 सेकेंड, एक स्टेप रखने में उसको 1 सेकेंड लगता है। हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन ए पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। जहां से वो स्टार्ट हुआ है वहां से 13 मीटर दूर पर एक पिट है, गड्ढा है, कितने सेकेंड के बाद वो, या उसको कितना टाइम लगेगा उस गड्ढे में गिरने में, राइट? सो नाउ दैट if we calculate the distance, how it is moving,
5 steps forward 3 steps backward, right? कितना आया? 2 मीटर चला, प्लस 5 steps forward 3 मीटर बैकवर्ड, कितना चला? 2 मीटर। और एक स्टेप 1 मीटर का है तो 5 - 3 2 मीटर चला। 5 steps forward 3 steps backward, कितना चला? 2 मीटर। 5 steps forward 3 मीटर बैकवर्ड, कितना चला? 2 मीटर। 2 2 2 2 कितना हो गया? 8 प्लस 5 steps forward plus 5 will give you how much? 8 plus 5 13 meter. That means he will fall in a pit after this much 5 meters चला, वो 5 steps forward जैसे ही गिरा, जैसे ही वो 5 step forward चला पिट में गिर गया, क्योंकि पिट कितना है? 13 मीटर। ये नहीं कि अब आप ये बोलो कि इट इज कमिंग 3 steps बैकवर्ड, अब वो पिट में, अरे भाई गड्ढे में से निकल के बाहर आएगा क्या 3 मीटर या 3 steps बैकवर्ड? अब वी नीड टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा। सी हियर इट हैज टेकन 8 सेकेंड, भाई 5 फॉरवर्ड चला 3 पीछे आया, 8 सेकेंड लगा। हियर इट हैज टेकन 8 सेकेंड 8 सेकेंड 8 सेकेंड, हियर इट इज 5 सेकेंड, कितना हुआ? 37 seconds. Total time taken to fall in the pit is 37 seconds. इतना expand करने की बजाय आप क्या लिख सकते हैं? What we can write? That, or another way you can just write, covers 2 meter in 8 steps. Yes, right? Therefore 8 meter in how much? 8 into 4. 2 into 4 will give you 8. So 8 into 4 will give you 32 steps. In next 5 steps, he will fall in pit. So 32 plus 5, 37 seconds. Because 8 plus 5 will give you 13, because this 8 plus 5 will give you, or we can say 13 meter, isn't it? 13 meter, not steps. Steps is more. Steps आप देखेंगे तो कितना हुआ? 8 8 8 8, 32 plus 5 37 steps. टाइम कितना लगेगा? 37 seconds. Hope it is clear. Yes, this finishes with distance and displacement, the main topic, the beginning topic of the motion straight line. Okay, thank you children for watching this video till the end. I will come with the next topic very soon. Till then, thank you everyone. Don't forget to subscribe, like, share and comment the video. Please, it is requested. Spread कीजिए, जितना ज़्यादा spread करेंगे उतने ज़्यादा subscriptions बढ़ेंगे, which will motivate me to bring more and more videos for you. Right? I am sure with these concepts, going through the videos till the end, you will be coming up with the good knowledge and confidence in yourself, and you will surely be liking or start liking the physics. Thank you once again.